जय माता दी आदेश। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम टू द इवनिंग सेशन ऑफ मार्केट एनालिसिस। मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 609th एपिसोड ऑफ लाइव एनालिसिस. So today is Sunday, so we will do the weekly analysis of global markets, Nifty, Bank Nifty, stocks, commodities, and Forex. So आइए जुड़ जाइए and let us start today's session. Before I proceed further, I hope you had a good weekend, and rewind. Let me remind all of you that next training is scheduled on August 13th and 14th. So all those guys who are interested to learn from us, you can WhatsApp and you can register for this training. So we will be covering a lot of topics from price action, technicals, and pro trader setups. And once you are added, you will be once you register, you will be added in our Telegram group support for a period of 3 months. Chaliye, let us start today's session. So let's discuss what happened on Friday and what's the position as of now of all the other asset classes. Yeah. So as I've been saying that the live sessions will start to happen uh, in the evening, not instead of night. We will do mostly between 5:30 to 7:30 on everyday basis. So I have been trying to shift it little early rather than keeping it at night. So, good evening. Yeah, okay. So let us start today's session. So first, let's talk about what happened on Friday. So Friday, there was some correction in the U.S. market. We saw S&P 500 just testing the psychological number of 4,000 over here, and then there was some sell-off. But this sell-off, I don't think is going to change the course of the action, because if we start to analyze all the things from a higher time frame, we get to see definitely some improvement in the charts. So last week, if you remember last week analysis, I had this concern that the US market is trying to break out from this big zone of 3720 on the lower side, and 3720 and 3920, and it was still in the same range for almost 4 to 5 weeks. And time has come that we either give a breakout or we start the next course of correction on the lower side. So market chose to give a breakout, and if you see the weekly chart on a weekly basis, I think market has given a very firm close as of now. So we will follow the weekly levels. We will follow the this breakout as a genuine breakout till we remain above 3900. So this automatically calls for a buy on dip approach. So any dip that comes in the market till 3900 with a stop loss of 3800 is a buy on dip opportunity for the S&P 500, and we should aspire to move towards a 4100, 4200, and all these levels should come. Now, if we look at the daily chart, why there was a selling? Because we had approached the crucial 65-day moving average, which came just near the 4000 level. So that is why there was a rejection. But I don't think it is going to deter the bulls. I think any dip that comes is a buying opportunity definitely. एक दो दिनों में थोड़ी सी और करेक्शन अगर हो जाए, so a proper buy on dip opportunity, I think a positional buy on dip can be done till we are holding 3500. So I think maybe the US market can choose to do some more pullback till 3850, and next target is 4150. Now, the coming important event in this week from the US is the FOMC meeting on July 27th. So that falls on Wednesday, I think. Yeah, Wednesday. So that is the most important event. So what I think is, even the Fed is going to raise the rates. Now it's a question of whether they are going to raise a 0.75 or a complete 100 basis points. uh, Last Thursday we had the ECB. So ECB has, after 8 years of keeping the rates negative, ECB has moved towards 0% rates. So it was negative in the last 8 years. Now they have come to neutral or 0% rates. So ECB ने भी अपने rates को hike किए हैं, and 50 basis points
they had committed, and they have done that. Bank of Canada, they have done full 100 basis points. So almost all the central banks, they are in the process of raising their rates because of inflation is at all time high. In some countries it is at 40-year high. So it's very likely that the Fed will also raise rates. Now, the most important thing will be whether they are raising 100 bips or they are raising 0.75. That is something we need to watch, and the most important part will be the commentary. Again, commentaries जो है ज़्यादा important होगा. So all in all, I think till we are safe at 3800, I think market जो है एक correction देना चाहिए. That should be bought, and I think next target is 4150. I think going into the event, market जो है सारी चीज़ों को डिस्काउंट कर लेगा. Now, one thing we also need to keep in mind that next coming couple of weeks, they are going to be very choppy, and I think there will be trouble playing the markets. स्टॉक्स को खेलना आसान होगा, इंडेक्स को खेलना आई थिंक काफ़ी कठिन होगा. सो यही अप्रोच लास्ट वीक भी हमने अडॉप्ट किया था कि स्टॉक्स को अपने हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, इंडेक्स को छोड़ दो, स्टॉक्स के लिए अलग पर्सपेक्टिव रखो, इंडेक्स को आप अलग तरीके से खेलो, क्योंकि ये जो एक थोड़ा सा टाइम है, यहाँ पे चीज़ें कभी बुलिश लगती हैं, कभी बेरिश लगती हैं. सो आई एम नॉट पर्टिकुलरली कीन ऑन कीपिंग अ वेरी रिजिड व्यू, एज इन कि बाजार बुलिश है या बाजार मंदी में. आई एम वेरी न्यूट्रल, आई एम वेरी ओपन एज ऑफ नाउ, बिकॉज आई थिंक दिस phase of the market doesn't calls for reading a trend per se. I think individual stocks को आप अलग तरीके से ट्रेड कीजिए, इंडेक्स को टेक वन डे एट ए टाइम, जस्ट ट्रीट देम एज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, और एक एक दिन के हिसाब से ट्रेड कीजिए. पोजिशनल व्यू यहाँ पे लेना, आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर बोथ बुल्स एंड बेयर्स. हालांकि टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से S&P 500 has given a breakout. Any dip that comes till 3850 is a definitely buy. Stop loss हम 3800 के नीचे रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे, एंड नेक्स्ट टारगेट इज 4150, जहां से लास्ट टाइम की एक गिरावट शुरुआत हुई थी. सो दिस वुड बी ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ अ वेरी नाइस ABC मूव. नाउ इस वीक के लिए मैं समझता हूँ कि 3800 शुड बी द बॉटम एंड 4150 शुड बी द टॉप, यानी ये एक रेंज में यूएस मार्केट को मैं देख रहा हूँ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट नेस्डैक, तो नेस्डैक ने एक अच्छी रेजिस्टेंस ली है फ्रॉम दैट 12800 लेवल, एंड बट in this process what it has done is it has broken above the triple resistance. तो ये जो आपका रेजिस्टेंस था, इसको Nasdaq ने अच्छे से जो है रिक्लेम कर लिया है. सो नाउ एनी डिप दैट कम्स, इट इज ऑटोमेटिकली अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. नाउ हियर Nasdaq मेड अ बेरिश एनगल्फिंग कैंडल, बट इसका इस समय कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट के ऊपर है. देयर इज नो रेजिस्टेंस एज सच हियर. सो दैट इज व्हाई इट इज जस्ट आई वुड से a panic or it's a bear trap. सो Nasdaq में दोस्तों कोई भी गिरावट आती है 12,000 तक, इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. यू कैन बाय ऑन रीटेस्ट ऑफ दिस. स्टॉप लॉस के तौर पे हम जो है आई वुड से वी कैन कीप 11,500, एंड नेक्स्ट जो टारगेट होगा Nasdaq में दैट विल बी 13,000. सो दिस इज अ नाइस ट्रेड, एंड पोस्ट 13,000 अगर Nasdaq फिर भी चलता है, then I think 13,500 can also come. So 12,000 on the lower side and 13,000 on the higher side, this is the expectation. Buy on dips इसमें जो है ये व्यू होगा. 11,500 का इसमें जो है स्टॉप लॉस होगा. नाउ डाउ जोन्स को देखते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट डाउ जोन्स, इसका चार्ट जो है थोड़ा सा और कन्विंसिंग है और बेहतर चार्ट है, एंड आई थिंक द डाउ जोन्स इज बेटर इंडेक्स. इट गिव्स अ बेटर पर्सपेक्टिव. यूएस का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसने एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है. अगर हम इसके चार्ट को अगर हम देखें, इसका अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आपके साथ शेयर करूं, सो दिस इज द लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ the small cap index of US, and you can see this has given a very nice correction from the top. So this was the top, and we declined all the way into pre-COVID high. So ये एक अच्छा indication है that these two were the big tops that were made before Corona crash. Then we had the COVID crash and the big breakout. So essentially this is a breakout retest, and you can see for many weeks this index has managed to hold at this level, and all these things were happening while the US dollar was rising. So I think this index has made a very long term, very credible bottom over here. Now it can choose to rally further and then again drop,
can break, all those things are can happen. But in the short term, I don't think it is going to break down the recent low. I think it's a buy on dip opportunity for, yes, some more upside, possibly till this level, this point can be tested on this index. So small cap index वहाँ का bullish है, Dow is bullish, S&P is reasonably bullish, and again Nasdaq is reasonably bullish. So uh, the small cap index is most bullish. That is the very peculiar thing uh, in comparison to the frontline index. So इस week तो ये मामला buy on dips ही रहेगा. Let's talk about some other indices because we need to see the global equity market as a whole right now. क्योंकि अगर कोई significant bottom in place है तो there will be a significant rally and you can't afford to miss that. अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने भी अपने पुराने फेब बॉटम को जो है टेस्ट किया है, which was during the war, and they have also started to bounce. And the French markets and the UK markets, they are also doing pretty good. Now I think July end तक market will be bullish, somewhat bullish. And after 5th of August, I think that will be the time when I will actually, be very keen on watching these indices. Uh, so that was pretty much the update on the global markets. Trend bullish है, हालात ठीक है, कोई मेजर ऐसे bearishness वगैरह अभी नहीं दिख रहा है. Some more upsides are due to come, and I think later on we will see. Time wise, I think 1 week or 10 days these markets can tend to remain bullish. They will discount the negative news to a large extent, but after 7 to 10 days, like after एक हफ्ते की ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा ये और ऊपर चल जाए, then it would be very interesting to see, because two things are very likely to happen. Either these guys have put in a major bottom over here, okay, or they are going to give a big bear market rally to confuse everybody and to trap the shorters and to bring in the late buyers over here somewhat in the later stage of the rally, and then plunge in a very big manner somewhere uh, after like 22nd August से लेके दिवाली तक. Okay, so because this view is not easy to predict or not easy to gauge, that is why I'm keeping a very very soft foot over here, and keeping stocks in a separate category and index in a separate category. ट्रीट वन डे एट अ टाइम ये अप्रोच होगा. लेवरेज को कम रखना है और बैकफुट पे ही ट्रेड करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेंसी. यूएस डॉलर ने फ्राइडे के दिन एंड लास्ट वीक अगर हम देखें तो एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे टेस्ट हुआ, एंड वी गॉट अ वेरी गुड करेक्शन. इनफैक्ट Friday के दिन there was a significant correction, and it broke the 3-day low over here and tested the previous breakout area. So now US dollar, this is at a very very important level, because अगर US dollar यहाँ से दोस्तों अगर ब्रेक करना शुरू करता है, that would be really bullish for the equity markets. And already हम देख रहे हैं कि equity के charts जो हैं ये improve हो रहे हैं, equity के charts जो हैं ये better positioned है. So even while the dollar was flying high, the equities they were holding, they were not breaking down. So that is something which we cannot ignore going forward. हाँ, 5-7 दिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट फॉर द टाइम बिंग वी हैव टू ट्रीट देम बुलिश ओनली. नाउ यूएस डॉलर अगर यहाँ से एक और जंप लेता है, फ्राइडे के हाई को क्रॉस करता है, तो फिर अगेन वापस से प्रॉब्लम चालू हो जाएंगे. वापस द इक्विटीज विच आर लुकिंग बुलिश, दे माइट अगेन टर्न बेरिश. सो दिस इज द प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ. सो टेक वन डे एट अ टाइम, इसीलिए ये मेरी सजेशन है. सो एज ऑफ नाउ राइजिंग वेज स्ट्रक्चर का ओवरथ्रो हुआ था, एंड वी हैव गॉट अ ब्रेकडाउन ऑल्सो. सो स्ट्रक्चर वाइज इट इज अ लुकिंग लाइक अ सम टॉप इज इन द प्लेस, बट प्राइस एक्शन वाइज जहाँ पे ट्रेंड को हम लोअर हाई और हाई और हायर लोज से डिफाइन करते हैं, I think we are still to break that structure. So let's see इस वीक में क्या होता है. I think Wednesday FOMC भी है, so probably for next 2 to 3 sessions nothing much will happen, and they would like to keep Wednesday as the day where either it starts to take off or there is a big sell off in the US dollar. So I think Wednesday के दिन जो है डिसाइसिव एक्शन बाजार में हमें देखने को मिलेगा. ये भी हो सकता है कि मार्केट जो है मंडे ट्यूसडे थोड़ा सॉफ्ट रहे, इट गोज इनटू द इवेंट विद सम
pessimism or it goes into the event on a back foot, इवेंट के दिन जो है नेगेटिव न्यूज आए, नेगेटिव तो नहीं मतलब इट इट कुड बी सम हॉकिश न्यूज, बट मार्केट विशेस टू फ्लाई, सो ये भी हो सकता है. ओके, so lot of possibilities remain. US dollar below Friday's bottom, that definitely puts the bullish case under question, and bearishness will definitely take a driving seat. Now what is strange, see what is strange is this कि US डॉलर ने फ्राइडे के दिन बहुत अच्छी एक सेल ऑफ की. The euro which was showing strength, that also went lower. Now this is again confusing, कि डॉलर भी नीचे है, यूरो भी नीचे है. ओके, ऑफ कोर्स यूरो के पास उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि जो थर्सडे को जो उनका जो पॉलिसी मीट का जो न्यूज़ आया था, दैट वाज नॉट वेरी गुड. इनफैक्ट एज आई हैव सेड कि उनकी क्रेडिबिलिटी हमेशा क्वेश्चनेबल रहती है. सो यूरो इज बेरिश, बट द वीकनेस इन डॉलर did not lift the euro, and that is something which is again it's puzzling me. ब्रिटिश पाउंड ने गेंस को थोड़ा सा होल्ड किया, लॉसेस को कंट्रोल किया, गेंस को थोड़ा सा होल्ड किया, बट यूरो ने वो चीज़ नहीं की. तो अगर हम यूरो का चार्ट देखें और फिर हम एनएससी फॉरेक्स फ्यूचर्स के प्लान भी डिस्कस कर लेंगे. सो इफ वी लुक एट द यूरो चार्ट, we are bearish on the euro and the British pound, so both of them dropped on Friday, so there were good gains in the forex market. So this is something which just needs to break. I think अगर euro मंडे को इसके नीचे जाना शुरू करता है, there will be new lows coming into the euro, and probably euro and dollar will again dance at the parity, and the Fed guys, they will decide who will dance long. So I think by Wednesday, euro should be retesting the parity, and then on Wednesday there will be decisive action whether the dollar has topped and dollar starts to decline, the euro has bottomed and the euro starts to rally. So Wednesday is a very important event. As of now, we are bearish, and I will tell the exact levels for NSC Forex futures. British pound की अगर बात करें तो इस पे भी हम bearish हैं. फ्राइडे के दिन देर वॉज अ ड्रॉप, एंड लेट नाइट यूएस सेशन में थोड़ा सा इसमें बाउंस बैक आया है, सो दिस इज नॉट गुड. बट लेट्स सी मंडे अगर इफ इट स्टे समवेयर हियर, then again that will be bearish, and we will continue to short the GBP INR pair. And once we get a break of these recent 4-5 candles, हमें इसमें breakdown दिखना शुरू हो जाएगा. Let's talk about interesting thing which happened with USD JPY, क्योंकि इस पे हम bearish थे, बट इसने फ्राइडे के दिन इसने जो है बहुत अच्छा अप ट्रेंड इसने ब्रेक किया है. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेन वेरी कंफ्यूजिंग. ओके, द यूएस डॉलर दैट वाज बेरिश, and because of that USD JPY had to go down, but the extent to which it dropped, almost 1%, and that too after US market opening going into the weekend, this is something again which is very confusing. So you can see there are no clear evidence over here from the macro perspective. हम एक चीज ये कर सकते हैं, सिंपल निफ्टी का चार्ट उठाओ, उसके हिसाब से काम करो. दैट वी कैन डू, दैट वी आर एनी विच वे इज गोइंग टू डू ऑन अ डेली बेसिस. बट सिंस आई टॉक फ्रॉम द मैक्रो perspective, this is the time when the macros are themselves very confused. Now if the macros are themselves confused, be rest assured कि मार्केट भी कंफ्यूज होगा, मार्केट भी कैचअप करेगा मैक्रोस को. It is always in tandem to the macros. So if the market is also going to be confused, market will give you long short both type of a trade. और अपने जो इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं वो अपनी स्टोरी अपने तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे. So that is why that approach of treating them separately. Now talking about the USD JPY, this is definitely bearish. Okay, ये बहुत ही बुरा sell off है. Now the only saving grace is if on Monday the USD JPY can again reclaim, then that would be some sort of a super positive thing, just like it did here. Okay, यहाँ भी ऐसी कुछ situation थी. So I don't know whether it will do or not, it's anybody's guess. And Monday we have early morning Bank of Japan, some news, and all those announcements are also there. So I'm not sure कि ये होगा कि नहीं होगा. But अगर हम past को देखें, so we had a case where we saw a similar decline, but the next day it was reclaimed and then it started to go to new high. So you may never know. We are living in interesting times. So if we shoot above 137 again, then this will certainly become very bullish, and again we should start to see 41 and 148 का जो मेरा target था at that time, it will come true. So we need to go above 137.
नहीं तो फिर हमें जो है इस पे हम बेरिश हो जाएंगे, विच मीन्स दैट जेपीवाई आईएनआर पेयर पे थोड़े टाइम के लिए हमें एक बुलिश साइड में प्ले करना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सो स्पॉट फॉरेक्स मार्केट में ये व्यूज हैं, ये अपडेट्स हैं। अब हम एक बार यूएसडी आईएनआर को चेक कर लेते हैं। सो यूएसडी आईएनआर इज स्टिल बुलिश, आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग। जब तक 79.5 का लेवल इंटैक्ट है तब तक ये बुलिश है, एंड एनी टाइम इट शुड स्टार्ट टू शूट हाइयर। नाउ फ्राइडे को जो यूएस डॉलर में वीकनेस था, आई थिंक दैट विल बी seen in the USD INR on Monday. So Monday को USD INR जो है थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। Okay, so that's the outlook on the USD INR. Uh, let's talk about the the NSE Forex futures first, and then we'll move to Nifty and Bank Nifty. So this is the USD INR futures contract, and next week में यानी इस week में the expiries are going to happen. So if you can see, we are trading in this big range for almost now 6 sessions, and I believe more or less we are going to trade in this range given the weakness in the US dollar. And Wednesday we have the FOMC. So I think before Wednesday, next 2 to 3 sessions, more or less we are going to trade in this range only. 80.25 on the higher side and then 79.7 on the lower side. I think ये 50 पैसे के रेंज में ही मुझे दिख रहा है आपका USD INR. And on the downside we had a very nice you can say cup and handle pattern breakout above 79.5. So largely speaking इस रेंज में जो है हमें प्ले करना चाहिए। आई थिंक इसको क्रॉस करना फॉर नेक्स्ट 2 days इट इज डिफिकल्ट। सो यू मे चूज टू शॉर्ट ऑल्सो, you may choose to short near say 80.05, stop loss 80.25, and cover again at 79.75. It's a very tight range of just 50 paise. So probably I would just stay away from this, and maybe if I get some more lower levels like from 79.5, that will be the time when I can take a risk. So 79.5 पे एक बहुत अच्छा लॉन्ग ट्रेड बनेगा, assuming that the overall dollar scenario remains intact. तो 79.5 पे हम रिस्क लेंगे लॉन्ग करने का, विथ मे बी 79 एज अ स्टॉप लॉस, एंड इन नेक्स्ट राउंड आवर टारगेट विल बी कम से कम लाइक 1 rupee 80.5 and 81 rupees bare minimum. Okay, now if the dollar story fades away after Wednesday, what will happen is that will be very good news for the USD INR. एंड आरबीआई जो इतना मेहनत कर रहा है डॉलर को शॉर्ट करने के लिए, आरबीआई के लिए बहुत ही रिलीफ होगा, and then the USD INR can choose to go little lower towards a 78.5. You can see this was a big candle. This is a big candle. So ultimately USD INR can land up here at 78.3 rupees. Okay. So next 3 days are very important. Range 79.5 से लेके 80.25 है. Short term trading के लिए you can trade between 80.25 and 79.75. Okay. So that's the view over there. Very quickly let's talk about the euro INR. So euro INR की हम बात करें तो कंसेक्यूटिव 3 दिनों से जो है ये बेरिश रहा है। वी आर बेरिश ऑन द यूरो INR, इसमें अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं GBP एंड द यूरो। नाउ हियर यूरो इज स्टिल बेरिश, एंड आई थिंक एवरी राइज इज अ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। सो यूरो की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ब्रॉडली स्पीकिंग 82 जब तक ब्रेक नहीं होता है, इट्स अ सेल ऑन राइज थिंग। ओके, and we saw consecutive bullish days here, and consecutive bearish days are also coming. So I think till 82 is not crossed, the major view is sell on rise. Monday की अगर हम बात करें तो 81.65 is the level to watch, and 81.65 से जो है आप शॉर्टिंग कर सकते हैं, 81.75 also, and keep 82 as your reference round number. And on the lower side, once we break the 81 level, 81 जैसे ही टूटेगा, आई थिंक वी आर इन फॉर अ मेजर ड्रॉप इन द यूरो अगेन बैक टू 80.5 80 रुपीज, एंड बिलो 80 रुपीज भी हो सकता है अगर पैरिटी पे वापस गया तो। सो आई थिंक यूरो एक अच्छा ट्रेड है, एक रिलायबल स्क्रिप्ट है ट्रेडिंग के लिए। 81.6575 पे शॉर्ट कर सकते हैं, 82 का स्टॉप लॉस होगा, एंड डाउन साइड में 81 इज द टारगेट। बिलो 81, बिलो दिस बिग ग्रीन कैंडल, आई थिंक इट्स गेम ओवर फॉर यूरो बुल्स, एंड वी आर हेडिंग बैक टू 80 रुपीज। एंड अगर पैरिटी ब्रेक होता है तो आप समझ जाओ कि बहुत अच्छा खासा ड्रॉप यूरो में हमें देखने मिलेगा। 82 का लेवल है for shorters that needs to be watched carefully. Similar thing was seen in GBP INR. So 3 consecutive days of bearishness.
हालांकि फ्राइडे के दिन थोड़ा सा एक अपटिक यहाँ पे आ गया. नाउ ऑन GBP INR, again we will follow the same thing, that 96.20, that remains the ceiling for now. And I think that is a very tough nut to crack. So I think for the time being 96.20 से लेके you can expect 95.50 इस रेंज में, इस 75 पैसे के रेंज में हम ट्रेड करेंगे. अभी भी हम सेल ऑन राइज ही करेंगे. लास्ट वीक भी हमने यही चीज किया था और इसमें अच्छी प्रॉफिट्स आई. नाउ बिलो 95.4, 95.5, यू कैन सी बिलो दिस लेवल, दिस वाज अ रेजिस्टेंस जिसे हमने ब्रेक किया. अब हम सपोर्ट ले रहे हैं बिलो दिस लेवल. आई थिंक इट इज गोइंग टू ड्रॉप मैसिवली. एंड सबसे पहले तो ये टारगेट देगा 94.6 का, 94.6 का यहाँ पे. ओके, एंड देन आई थिंक इट्स अ लॉन्ग वे डाउन टुवर्ड्स 92.5, जिसके बारे में हमने लास्ट वीक डिस्कशन किया. So 96.25, that is the main resistance level. Sell on rise की सलाह होगी. Even short near 95.8, that sort of a level, 95.890 somewhere here. Okay, and downside में आपका पहला target होगा 95.45, and if that is broken, straight away we are heading 94.5, which is the last support. So you can see 96.25 से लेके 94.5, this is the range. Bearish bias, sell on rise below 94.5, टाटा बाय बाय यूके. ठीक है, सो ये हो गया आपका GBP INR पे डिटेल्ड एनालिसिस फॉर टुमारो एंड फ्रॉम अ पोजिशनल परस्पेक्टिव एज वेल. JPY INR की अगर हम बात करें तो इसमें एक ट्रबल होने वाला है. वी आर बेरिश, एंड सिंस मेनी डेज वी आर बेरिश, और इस पे काफ़ी राउंड ऑफ प्रॉफिट्स हमने ले चुके हैं. Now, with the late night drop on Friday, what will happen is there can be a gap up opening in the JPY INR. So हमने ये एडवाइस दिया था पिछले काफ़ी दिनों से, that we need to be seller, keeping 58.3, 58.45 as a supply zone. So we have been selling, we got profits here, we got profits here. फिर उसके पहले हम यहाँ भी शॉर्टिंग किए हैं, तो ये एक राउंड था, ये एक राउंड था, ये एक राउंड था. सो आई थिंक इसमें 6 राउंड हो चुके हैं ऑफ प्रॉफिट्स. बट मंडे व्हाट विल हैपन इज, अगर स्पॉट मार्केट में कल सुबह तक अगर USD JPY 137 को क्रॉस नहीं करता है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल गैप अप. सो ये गैप अप आपका देगा लगभग 58.80, 58.90, यहाँ तक तो देगा ही गैप अप, क्योंकि 1% जो है वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है. एंड इट क्लोज समवेयर 58.30. सो नाउ हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन. सी, नंबर वन, अगर यहाँ खुलेगा तो हमें डेफिनेटली लॉस होगा. बट because the forex markets, they don't pretty work in a way like you trade your index and all. So here we do more of mean reversion trades. So in this case we can do one thing, we can continue to fade this move. Okay, because in the USD JPY spot, number one, we have गुड सपोर्ट एट 136. एक तो वो फैक्टर है. दूसरा क्या फैक्टर है कि क्योंकि डॉलर वीक है, USD INR जो है ये भी 30-40 पैसा नीचे जाने की कोशिश करेगा, चेष्टा तो करेगा. ठीक है, सो वी कैन बेनिफिट फ्रॉम द वीकनेस इन द, और स्ट्रेंथ यू कैन से, और स्ट्रेंथ इन द USD INR पेयर. सो दैट वुड ट्राई टू लिमिट दिस थिंग. एंड अगर वहां पे USD JPY ऊपर शूट हो गया तो ये आपका डबल बेनिफिट मिल जाएगा आपको. ठीक है, so the logic needs to be understood first before trading. So how you can handle, we can short fresh intraday near 58.8 and 90, but keep 59.20 as a stop loss. So let me just write it down here. 58.90 के आसपास 5 पैसा इधर उधर हम शॉर्ट कर सकते हैं. कीप 59.20 एज अ स्टॉप लॉस. ठीक है, एनी प्रॉफिट्स यू गेट, फर्स्ट यू बुक दिस मच, इसको जो है आप लॉक कर सकते हैं. ओके, देन अगेन इफ इट गोज अप इंट्राडे, अगेन शॉर्ट. इफ इट कम्स डाउन, अगेन बुक प्रॉफिट्स. दिस वे यू नीड टू हैंडल, यू नीड टू, इसको जैसे ऑप्शन में आप एडजस्टमेंट बोलते हो, उसी तरीके से करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आपको इस तरीके की सिचुएशंस के साथ डील करना होता है. नाउ इफ द ओवरऑल medium term hypothesis of the macros is correct, what will happen is even after an anomaly like this, the path will again go down, and that time you will get bumper rewards. Keep in mind 59.20, इसके ऊपर कोई भी शॉर्ट्स को नहीं रखना है. that is end of the deal. Okay, so if the banks are still believing in the deal, they will do exactly what I'm saying. ठीक है,
एंड देन नाउ 58.30 आपका ये एक सपोर्ट बन जाएगा. सो आप इस रेंज में खेलेंगे 59 से 58.3. 58.3 के नीचे की क्लोजिंग जिस दिन आ जाएगी, अगेन बिग बिग हैमरिंग वापस से शुरू करेंगे, एंड दैट्स अ गारंटी टुवर्ड्स 57 एंड पॉसिबली 57 पॉइंट सॉरी 55.5 लेवल्स ऑल्सो. सो बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ JPY INR पेयर पे. I hope you can maximize on this. So that ends the forex futures analysis. Now let's come back towards the main chart. जो लोग अभी जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. Now let's talk about commodities. So there are a lot of things to talk about. So सबसे पहले हम गोल्ड के सब्जेक्ट में बात करते हैं. Now gold is a interesting subject over here. Why? Because we are going to get some good trades in the gold market. So gold last week, I had said that 49,500. This is now bottom for the gold, and don't short gold because we might have a case of a reversal, which after the weekend analysis has proven correct. सो गोल्ड को हम कैसे ट्रीट करेंगे दोस्तों? एनी डिप दैट कम्स टुवर्ड 50,000 50,100, दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो गोल्ड को हम बाय कर सकते हैं लमसम में कहूं तो 50,000 के आसपास. ओवर हियर यू कैन बाय 50,200 से लेके 50,000 and keep this candle bottom 49,700 as a stop loss. Okay, and first target hoga 51,000, second target hoga 51,003, and third target will be 52,000. So I will just write down here: buy gold on pullback near to, you can say, 50k. स्टॉप लॉस मैं राउंड फिगर लिख देता हूँ 49.5k. पहला टारगेट हो जाएगा आपका 51k, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 51.5k, एंड थर्ड टारगेट इज 52k. ठीक है, सो दिस इज द पोजिशनल मीडियम टर्म व्यू. आई डोंट सी गोल्ड टैंकिंग बिलो दिस in any case. I think gold has made a good bottom. Yes, this is not the start of any bull run, but yes, we are again heading back to this level. So you can say that we are practically going to trade between this high and this low. So we are going to trade near 50 as a base for 52 as a ceiling. 50 से 52,000 के बीच में गोल्ड का ट्रेंड है, बाय ऑन डिप की सलाह है. नाउ इससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग केस डेवलप होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है बट होगा. सिल्वर में, सिल्वर इस समय चल रहा है 55,000 के आसपास. नाउ इफ आई शो यू द लॉन्ग टर्म चार्ट ऑफ सिल्वर, सिल्वर इज ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग इट्स बिग डाउन मूव, जिसके बारे में हमने काफी पहले से डिस्कशन किया है. सो वी स्टार्टेड टू बिकम हैमरिंग और बेरिश एंड हैमरिंग सिल्वर बिलो द 68,000 लेवल. और तब से मैंने आपसे एक ही चीज कहा था कि 56,000 56,000 will come, and that was our target. Now we have basically reached the lower part of this brutal decline over here. So this is a place where you can see some good bottoms were made. So how we will turn into buyer? अभी बाइंग नहीं करना. बाइंग कब करना है? जब ये स्विंग बॉटम के ऊपर प्राइस चला जाए तब, और वो लेवल है 56,100 का. So once we see a bullish candle on the weekly chart over here, that would be a takeoff point, just like the previous instances. So this has acted as a resistance, broken out, acted as a support, and we are coming at this level after a long time, sloping wise, and from a supply demand perspective we are coming here after long time. ठीक है, सो ऑल इन ऑल सिल्वर पे जो है पूरी नजर है हमारी. 56,000 के ऊपर सिल्वर में हम तेजी में आ जाएंगे, और मीडियम टर्म में मैं 60,000 दिख रहा हूँ, यानी 56 से 60 के बीच में सिल्वर को हम पोजिशनली देख रहे हैं. एक्चुअल ट्रेड्स मैं ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर कर दूंगा. याद रखिए, we need to move above 56. Okay, so we will buy above 56, और हम 54 का एक स्टॉप लॉस लेंगे. इनिशियली स्टॉप लॉस बड़ा है, बट इसे हम धीरे धीरे कर्टेल करेंगे, एंड वी विल कीप प्लेइंग फॉर द हायर साइड. So that's the update over there. Now comes the interesting part, crude oil. So crude oil पे फ्राइडे के दिन बहुत अच्छी ट्रेड्स हुए. हमने पहले 2-3 दिनों से इसे शॉर्ट साइड में प्ले किया. फ्राइडे को हमने एक बार लॉन्ग किया, लॉन्ग में स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरी बार किया, दूसरी बार जो है प्रॉफिट्स मिल गया. सो क्रूड लास्ट वीक जो था काफी अच्छा क्रूड साबित हो गया, स्पेशली लास्ट 3 days. नाउ व्हाट इज द पिक्चर ऑन क्रूड ऑयल? सी, क्रूड ऑयल इज वेरी इंटरेस्टिंग केस, क्योंकि आई थिंक क्रूड इज अगेन गोइंग टू रैली.
नाउ इसका रीजन क्या है? सी, क्रूड ब्रॉडली स्पीकिंग is sitting at a massive level, okay, and it is sitting at a dangerous place, because two things are going to happen. See, on Friday we got some good news coming from Russia Ukraine. Number ek baat, that was good for the markets in the short term, but I think it is bad in the mid term. Now today also there are some slight good news coming from Russia Ukraine. Now, if the news are genuine, ideally the energy prices should weaken, okay. बट वी सॉ फ्राइडे के दिन नेचुरल गैस जो है ये बहुत ही बम्पर तरीके से एनजी ने रैली किया है. So that is why I'm not believing these news. These news are maybe just some kind of a makeup or a window dressing. I don't think they are going to survive the test of time. It's just a pullback from a war perspective. Now, if the war is getting over, I think that can turn out to be bad news for the market. For market to remain bullish, we need bad news, and if the bad news are subsiding, if the market has staged some comeback rally, I think that is very very dangerous for the market. Okay, so अगर ये न्यूज़ यानी अगर वॉर खत्म होने वाला है तो डेफिनेटली आपका एनर्जी प्राइसेस में कूलिंग इफेक्ट होना चाहिए. वी कैन सी दैट क्रूड इज सिटिंग एट अ मैसिव सपोर्ट. ओके, सो इफ द न्यूज़ एंड ऑल दोज थिंग्स आर करेक्ट, वी मस्ट टेक आउट दिस कैंडल बॉटम जो कि लगभग 7,200 पे है. मुझे नहीं लगता ये चीज़ होगा. व्हाट आई बिलीव इज क्रूड इज गोइंग टू फॉल लिटिल ऑन मंडे और ट्यूसडे, थोड़ा सा एक डाउन साइड में भी, and somewhere from here crude can again start to rally in a big manner. Okay, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ तक, बट इन अ बिग मैनर का मतलब है कि 1,000 पॉइंट की छलांग मुझे लग रहा है क्रूड में कुछ इस तरीके से कि एक मूव आएगा. So I think crude is at a support. Crude is going to hold this 7,200 level, and probably up from 7,400, 7,350 somewhere here. Crude is going to stage a rally till 8,500 level. ये 1,000-1,200 पॉइंट की एक बड़ी चाल है जो मेरे ख्याल से आने वाला है. 72 के नीचे हम जो स्टॉप लॉस रख सकते हैं. We can keep 7,100 for that sake. Let me just check the precise level. I think it is what 7225. So 7,100, 7,125 you can keep for a target of 8,500 from a big positional perspective, and you can choose to buy somewhere near 7,400 के आसपास. Now, as a result of this, I see natural gas dropping, but natural gas को ट्रेड करना ये खतरे से खाली नहीं है. So I would strictly advise कि आप इसके हाथ ना लगाएं. Only and only if you understand, then only you touch it or just forget about it. हालांकि हमें पता है कि एनजी जो है अब क्लोज टू एक सॉर्ट ऑफ अ पीक है. एक दो दिनों में हो सकता है ये थोड़ा और ऊपर छलांग लगा के 675 वगैरह वापस से टेस्ट करके नीचे गिरना शुरू करे, एंड क्रूड कैन गो हायर. इनवर्स रिलेशनशिप मेंटेन हो सकता है, बट क्रूड कैन बी ट्रेडेड. क्रूड इज ट्रेडेबल, but NG is beyond an average person's reach. So that is why NG में बहुत ही सोच समझ के काम करना. Now, so that's on the crude. So crude में exact जो trades होंगे ये मैं group members का share कर दूंगा. But overall, I have said I'm bullish on crude. I think 7,200 is going to hold. It's a very great level, and we can go all the way till 8,500 very very soon. एनजी के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट. लेट्स टॉक अबाउट एनजी. सो दिस इज द लास्ट 3 month upper end of NG near 670 700 zone. So I think NG is going to peak out somewhere here again near 696 or thereabout. So NG may if I see uh, a good opportunity near, I would say 690 के आसपास, यहाँ कहीं 690 700 के आसपास, only then I would try to take a shot on NG with some big stop loss, or else just forget about it. क्योंकि इसे ट्रेड करना it's literally it's like playing with fire. So only and only if I see this swing high coming, probably then I will try for again a target of very simple 500. तो ब्रॉडली मैं इसे 700 से 500 एक बड़े ट्रेड के तौर पे ही मैं इसे काम करूंगा, या तो मैं छोड़ दूंगा. ठीक है, सो दैट इज द व्यू. सम अपसाइड बट देन अ मेजर डाउनसाइड बैक टू दिस पोर्शन. ठीक है, यही चीज मेरे ख्याल से यहाँ पे इस तरीके से रिपीट होगा. सो दैट इज द ब्रॉडर व्यू of NG. Some changes are there in the base metal market. Now, why these changes are there?
why these commodities are suddenly looking bullish. Because if we look at the we had uh, the CRB index that is turning bearish. Okay, so if I can show you that index, that is at a very great level, and that is almost going to turn bullish. Sorry, not bearish, bullish. So this is the long term chart of CRB index, and we are coming at a great level. So probably this is the reason why gold started to look bullish and crude is looking okay. Now if I correlate the base metal with this index, we can see copper. So copper पे दोस्तों अब मैं bullish हूँ. ठीक है, so copper पे I think there is a very great setup that is coming. 617 पे buy, सिंपल मैं ट्रेड ही बताता हूँ. 617 पे buy, स्टॉप लॉस 600. ठीक है, टारगेट पूरा ओपन है. फर्स्ट टारगेट होगा 600 640 एंड सेकंड टारगेट इज 670. दैट्स इट. either stop loss or I think 670 will come. So that's the trade, a simple trade coming on copper. 640 आखिरी इसका resistance है, and above that it's a big breakout. So you can see copper, this is the breakout point 640 के ऊपर. So any dip that comes here near 617 से लेके 612, it's a very good trading opportunity. I will take the short over here. Doesn't matter कि risk कितना है, but this is a short worth trying. Above 640 we are first poised to take out 670, 690, and possibly 700 also. Now दिस इज ऑल्सो अ गुड प्लेस फ्रॉम अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी परस्पेक्टिव. यानी जिन्होंने मेरी ट्रेनिंग वगैरह अटेंड की है तो उन्हें मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यानी कि बिजनेस कैसे करना है, कहाँ पे पैसा जो है रिस्की है लगाना, कहाँ पे रिस्क है बट वहाँ पे जो है आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है. इफ यू understand these diagrams, then this is definitely a short worth trying, because this is where the margin of safety lies for the buyers, not the sellers. Okay, and we can see that at this place the volumes have also risen dramatically. Now maximum people volume को गलत तरीके से रीड करते हैं. When you are hitting a potential good value zone on a increasing volume, it is actually a very good sign, not a bad sign. ठीक है. And similarly, when you are hitting a supply zone on a rising volume, on a strong rising volume, it's a bad news, it's not a good news. So ये opposite चलता है, जैसा कि आप किताब में पढ़ते हो उसके opposite चलता है. So this is a nice place for copper. 640 के ऊपर ये जो है बहुत ही धमाकेदार रैली होगी, and this is the stop loss. सो दैट्स द सीन ओवर देयर. बाकी एल्यूमिनियम की बात करें तो अगर कॉपर बुलिश हो रहा है शॉर्ट टर्म में तो एल्यूमिनियम भी होगा. एंड आई रियली लाइक द वे एल्यूमिनियम इज शेपिंग अप. सो एल्यूमिनियम पे भी हम बाय ऑन डिप करेंगे. 200 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और बाय के तौर पे 206 एक अच्छा लेवल है, एंड 200 के नीचे स्टॉप लॉस होगा. जिंक की अगर बात करें तो 277 है, जिंक भी अच्छा बुलिश टर्न हो रहा है. 268 पे बाय होगा, एंड रीसेंट बॉटम जो है 260 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा. So pretty much that's all. I have covered all the tradable commodities: gold, silver, crude, NG, copper, aluminum, lead. Not lead, zinc. Lead में कुछ खास होता नहीं है, so we will just pass it on. Okay. So I think all of you must be exhausted क्योंकि already 42 मिनट हो चुके हैं इतना सब बात करने में, और निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन नहीं किया है. सो लेट मी नो इफ यू आर एग्जॉस्टेड और नॉट. अब हम एक बार क्रिप्टो पे नजर डाल लेते हैं. सो बिटकॉइन और इथेरियम लगभग वहीं झूल रहे हैं झूला, एंड बिटकॉइन ने थोड़ा 4 दिन का एक सॉफ्ट करेक्शन दिया है, एंड बिटकॉइन शुड अगेन गो बैक टुवर्ड्स 25,000 टू टेस्ट दी 65 डे मूविंग एवरेज. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, इसमें कोई भी वीकनेस नहीं है. 20,000 के नीचे आप एग्जिट कर सकते हैं. अभी 25,000 की तेजी एक बाकी है बीटीसी में. इथेरियम की बात करें तो आई थिंक इट हैज डन फैंटेस्टिकली वेल. आई थिंक इथेरियम की जितनी तारीफ किया जाए कम है. ब्रिलियंट, तो बहुत ही ब्रिलियंट इसने काम किया है, एंड द वे इट रैलीड एंड एवरीथिंग. सो इथेरियम, दैट इज व्हाई इथेरियम इज माय फेवरेट एज कंपेयर टू बीटीसी. इथेरियम दोस्तों अभी भी 1730 वगैरह जो है छलांग लगा सकता है. नाउ वेडनेसडे विल बी द डिसाइसिव टाइम फॉर क्रिप्टो. आई थिंक वेडनेसडे के दिन क्रिप्टोज में बहुत बड़ी एक्टिविटी होगी, वेडनेसडे एंड देन आफ्टर द एफओएमसी. फिलहाल के लिए बोथ ऑफ देम आर बुलिश. सम मोर अपसाइड्स कैन कम इन ईच ऑफ
the cryptos. That's all I have to say. Now let's स्टार्ट विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, सो एक बार मैं अपडेट देता हूं कि नाउ वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस ट्रेनिंग. सो अगस्त 13th एंड 14th की स्केड्यूल है, 2 days का ट्रेनिंग है ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, फॉरेक्स, एमसीएक्स. लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड. Morning 9 to 6. If you are interested, you can WhatsApp and you can join. Once you join, you will be added in the Telegram group. चलिए अब निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं. सो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही लंबी है. सो लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन करना भी काफ़ी कठिन है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट. मैंने एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए एक सिंपल चार्ट बनाया है विच विल हेल्प मी इन clearing the confusion. So this is the simple chart of Nifty. ये निफ्टी स्पॉट है. अक्टूबर में यहाँ पे पीक हुआ, फिर एक डिक्लाइन, काउंटर बैक रैली, देन अ बिगर डिक्लाइन, अगेन बिग रैली, एंड सिंस देन another decline. और आफ्टर दिस डिक्लाइन वी आर राइट नाउ कंफ्यूज्ड कि क्या ये बिग रैली है, स्मॉल रैली है, क्या ये बेयर मार्केट रैली है, या क्या है ये. ठीक है, सो कंफ्यूजन अब दूर कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है. नंबर 1, आप सोचने का ओरिएंटेशन क्या है, कंफ्यूजन वहां से शुरू होता है. सो बिकॉज यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ अ बिगर ट्रेंड, that is where the confusion is arising. If you just think from a weekly perspective, there will not be any confusion. So for the coming couple of weeks, I would strongly suggest, don't think in terms of a bigger trend. Just think from a वीकली पर्सपेक्टिव. ठीक है, और उस हिसाब से काम करिए. आने वाले 1-2 हफ्तों में चीज़ें वैसे भी क्लियर हो जाएंगी कि हमने बेयर मार्केट यहाँ पे ख़त्म कर लिया है, एंड दिस इज स्टार्ट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ बिग रैली, एंड वी आर गोइंग लाइक दिस और समथिंग लाइक दैट, फॉर अ न्यू हाई, और वी आर सिंपली डूइंग रिपीट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड यहाँ भी हम एक ऐसा कुछ करते हैं, एंड देन वी आर हेडेड towards big sell off towards 14,000 level in this particular format. ठीक है, now ये जो चीज़ है ये आने वाले 1-2 हफ्तों में क्लियर हो जाएगी. इसे इतना टाइम भी नहीं लगेगा, आने वाले 1-2 हफ्तों में क्लियर हो जाएगा. टिल देन आई विल टेल यू बेस्ट वे टू डील विद दिस मार्केट एंड ऑल्सो मेक मनी. नाउ सी व्हाट इज द सिचुएशन. हम देखते हैं, तो निफ्टी इज स्टिल टू क्रॉस दिस स्विंग हाई, जो कि हमने इनिशियल पार्ट ऑफ आई थिंक जून में बनाया था, या इट वाज इन जून. सो वी आर येट टू क्रॉस दिस स्विंग हाई, बट इफ वी सी द बैंक निफ्टी, if we see this bank nifty chart, then we have already crossed that. ठीक है, we have already crossed that 3 days back. So that was the sign of strength. Now remember guys, last week मैंने आपसे कहा था आफ्टर मंडे नाइट और आई थिंक ट्यूसडे, मैंने आपसे कहा था कि इस मार्केट को शॉर्ट मत करना. अगर लॉन्ग नहीं कर सकते तो मार्केट से बाहर बैठो, जैसे मैं बाहर बैठा हूँ. ठीक है, आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि मैं इसमें से बाहर बैठा हूँ. इट्स वेरी इजी. ठीक है, बट आई एम स्टिल वेरी गुड, आई एम स्टिल इन अ वेरी गुड पोजिशन. वाई? क्योंकि मेरा मन हल्का है. ठीक है, एंड वॉट आर अदर गाइज डूइंग? दे आर ट्राइंग टू शॉर्ट दिस मार्केट, राइट? क्या आप अग्री करते हैं कि नहीं अग्री करते? यू अग्री और डिसअग्री? ये चीज मैंने यहाँ पे आपको कहा था कि अब मार्केट तेजी में है या मंदी में है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट वन थिंग आई एम श्योर इज ये मार्केट सबको चूना लगाने वाला है. ठीक है, सो द बेस्ट थिंग इज टू स्टे आउट इफ यू कांट ट्रेड इट ऑन द लॉन्ग साइड. ठीक है, नाउ वेयर हैव वी रीच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी ने अपने इस स्विंग को क्रॉस कर दिया है. ठीक है, विच इज अ वेरी गुड साइन एंड विच टेल्स कि निफ्टी भी इसको क्रॉस कर सकता है. ठीक है, सो हमें एक इंफॉर्मेशन इज वेरी क्लियर दैट market right now in the extreme short term is bullish, and look at the pattern. After this bottom was made, after this red candle was made, every day we are defending the previous day bottom, isn't it? We are defending the previous day bottom. नाउ ये एक peculiar behavior बाजार का बन जाता है while being bearish and while being bullish. गिरते समय प्रीवियस डे हाई को रिस्पेक्ट करता है, बढ़ते समय प्रीवियस डे लो को रिस्पेक्ट करता है. यही चीज आपने अधिकतर पोर्शन में आप देखेंगे, अधिकतर पोर्शन में आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में आपको ये बिहेवियर दिखाई देगा.
ठीक है, यहाँ भी यही चीज था। सो हम इस मार्केट में जब तक प्रीवियस डे बॉटम के नीचे क्लोज नहीं करता है, या जब तक कि कोई एक ऊपर के लेवल पे जाके डेली बेसिस पे रिवर्सल नहीं देता है, हमें इस मार्केट में कोई शॉर्ट वॉट करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, यही बात मैंने ट्यूसडे को भी कहा था कि जब तक डेली बेसिस पे रिवर्सल नहीं आता है, इसे मत शॉर्ट करो, क्योंकि ये मार्केट जो अभी तक सॉफ्ट लग रहा था, ये 2-3 दिनों के अंदर ही सबको खाने लगेगा। ओके, बिकॉज दैट इज हाउ दिस मार्केट्स आर डिजाइंड। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब व्हेन इन डाउट स्टे आउट। Okay, either you participate or you become an observer. So I was observer, but from Monday I will again participate. Now how will I do that? So let's analyze. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो स्विंग हाई है निफ्टी में, दैट इज 16,800 लेवल। हमने एक जोन डिस्कशन किया था कि 16,660 से लेके एक 16,860, दिस इज द ट्रबल एरिया फॉर निफ्टी। ओके, नाउ इसमें हम एक एडिशन करते हैं 16,985। ओके, नाउ व्हाई आई एम एडिंग दिस लेवल इज बिकॉज ऑफ टू रीजन। नंबर वन, क्योंकि बैंक निफ्टी करस्पॉन्डिंगली इस लेवल पे है। तो अगर बैंक निफ्टी अपने आप को इंटैक्ट रखता है, तो निफ्टी को जो है किसी भी तरीके से वो पुल अप करेगा और वो यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात कि 16,985 पे इस पूरे डिक्लाइन का फिब गोल्डन रेशियो है 61.5। सो दिस इज अ मैसिव रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट ऑन ऑल द काउंट्स। दूसरी बात, दैट वुड ऑल्सो कंप्लीट दिस सिमेट्री कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर है तो ये भी इसके ऊपर चला गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, ऑल्सो एक चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अभी तक का जो टाइम वाइज जो लॉन्गेस्ट जो अपमूव था, दैट वाज हियर। ये 45 कैलेंडर डेज था। ठीक है, एंड वी वुड कंप्लीट 45 कैलेंडर डेज आफ्टर द जुलाई एक्सपायरी, somewhere 2nd 3rd of August. Okay, so this also looks very nice that you keep July completely bullish. Okay, you keep July, see July, you keep July completely say bullish, enter into August, and probably then bring a correction in the market in a very peculiar manner and from a very supply driven zone. आप देख सकते हो दिस इज अ वेरी वेरी ट्रिकी पोजीशन। यहाँ पे इतने रेजिस्टेंसेस हैं छोटे बड़े और इतने सारे लेवल्स हैं कि किसी एक लेवल को पिन पॉइंट करना, आई थिंक इट इज फुलिश। ओके, सो वी आर इन दिस बैंड ऑफ 300 पॉइंट्स, जहां पे कभी भी कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, या फिर मार्केट बेयर ट्रैप बनाते बनाते ये 16,985 पे चल जाए एंड वी कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स एंड पॉसिबली देन स्टार्ट द करेक्शन। ओके, सो क्योंकि ये बहुत सारे इफ एंड बट वाली सिचुएशन है, हम यहाँ पे कैसे काम करेंगे, हम यहाँ पे हर दिन का प्लान लेके चलेंगे और उसके हिसाब से काम करेंगे फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव। हमारा मॉब लेवल इस वीक का जो है वो हो जाएगा फ्राइडे के नीचे का लेवल, विच इज थर्सडेज हाई, एक्सपायरी का हाई, फ्राइडे का बॉटम विच इज 16,600। सो फ्रॉम अ वीकली पर्सपेक्टिव, इफ आई हैव टू राइट वीकली मेक और ब्रेक लेवल, हमारा इस वीक का होगा 16,620, यानी 16,600 में लिख देता हूँ। ठीक है, एंड फर्स्ट टारगेट ऑन द हायर साइड विल बी योर 16,800 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,000। ओके, लास्ट वीक हमने 16,280 हमने इसको हमने वीकली मॉब लेवल रखा था और इसके ऊपर इस जोन में आने की बात करी थी, जो कि यहाँ पे हो चुका है। सो दिस वीक टिल वी आर नॉट ब्रेकिंग बिलो दिस, आई हैव एक्सप्लेन द रीजन व्हाई वी शुड बी बुलिश, एंड हमें सबसे पहले इसको ब्रेक करना है विच इज 836 एंड देन 16,985, दैट इज द पोर्शन। सो हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड करेंगे। बिलो 16,600 दैट ऑटोमेटिकली कॉल्स फॉर अ प्रॉफिट बुकिंग थिंग एंड वी हैव अ अनफिल्ड गैप। कहाँ तक गैप है? 16,400 तक की गैप है। सो नीचे में 16,400, मे बी 25 पॉइंट्स हियर एंड देयर, somewhere 375 to 400, ये हमारा डाउन साइड होगा। सो फ्रॉम अ वीकली रेफरेंस परस्पेक्टिव 16,600 इज योर सपोर्ट। इसके ऊपर बाजार तेजी में है, बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं और 985 तक यानी 17,000 तक का स्कोप है फ्रॉम वेयर ट्रबल कैन कम। नाउ व्हाट्स द सिनेरियो? फ्राइडे को यूएस मार्केट बेरिश था, so maybe we open gap down and maybe we can correct first here
and then possibly shoot higher into the expiry. ये भी situation possible है, या फिर we come till 16,600 on Monday and again shoot up to complete the targets till expiry. Maybe after expiry, which is once the August has started, probably from here we start some correction. सो लेवल टू लेवल काम करेंगे, ये मेरे ख्याल से सही होगा. वीकली ये व्यू था. अब कल के लिए हम किस तरीके से पोजीशन कर सकते हैं from an intraday perspective, that is more important. See, if we look at the Friday profile, we have a multiple distributions, we have good supports coming up, and इसको हम ट्रेड बड़ी सिंपल तरीके से ये करेंगे कि अगर मंडे को गैप डाउन होता है, देन आई वुड पेशेंटली वेट फॉर मार्केट्स टू कम नियर दिस एरिया 16,622 के आसपास, जो कि आपका बॉटम है, जो कि ये हाई है. एंड समवेयर हियर आई वुड लाइक टू see bullishness to come, and I would long near 16,600, which is also our mob level. यहाँ पे मैं long करूँगा और मैं 500 का stop loss लूँगा. So 16,500 will be stop loss, 16,600 will be place to go long. Target will be to test this high, which is say 16,700, and if it wishes to close higher, then very good, higher targets will also come. सो कल का जो एक मॉब लेवल परस्पेक्टिव से मैं बात करूं, तो हमारा मॉब लेवल बन जाएगा 16,700. ठीक है, ये आपका लेवल है मॉब लेवल. इसके नीचे मार्केट बेरिश है ऑल द वे टिल 16,600, जहां से एक पोटेंशियल ग्राउंड है एक वापस से लॉन्ग करने का, रिवर्स करने का. सो लुक फॉर साइंस, ओनली देन यू स्टार्ट टू गो लॉन्ग. सपोज अगर कल ग्लोबल क्यूज भी नेगेटिव है और चीज़ें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, देन यू डोंट नीड टू लॉन्ग. आप जो है बाहर बैठें, आप चीज़ों को देखें. ओके, बट यस, इफ थिंग्स आर लुकिंग गुड, इफ देर आर सम रिवर्सल कमिंग, देन डेफिनेटली छोटा स्टॉप लॉस है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है, एंड ट्रेंड को हम फॉलो कर सकते हैं, एंड वी कैन अगेन गो लॉन्ग. 16,700, अगर 700 के ऊपर मार्केट नीचे जाके ऊपर आता है, तो फिर ये मार्केट स्ट्रेट अवे 16,800 को भी टेस्ट करेगा. ठीक है. दूसरा एक सिचुएशन है कि सपोज मार्केट डजंट ओपन a big gap down, but it just opens niche and starts to shoot higher and goes towards 16,835. ठीक है. Now this is a place where some trouble will happen to market. Okay, so watch for this area. अगर यहाँ से आपको start मार्केट के फर्स्ट हाफ में अगर पहले मार्केट यहाँ जाता है, I think there will be profit booking, and from here you can expect mob level to be tested once, and probably then it can again go higher. So ये एक दूसरा सिनेरियो. पहला सिनेरियो है फ्राइडे के ग्लोबल क्यूज को ध्यान में रख के पहले नीचे की चाल, फिर देन ऊपर, इस तरीके से. दूसरा है मार्केट चूजेस टू डिस्काउंट फ्राइडे ग्लोबल डाउनसाइड मूव, goes higher, profit booking comes, you play for the short side here, and then again it can go. So this is a trade that you can take, but again don't get trapped, क्योंकि हम अभी बुलिश फेज में हैं. 50-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप लगा के इसे खेल सकते हैं. दैट्स ऑल ऑन द निफ्टी फ्रंट. बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी बुलिशनेस दिखाई है ऑन ऑल काउंट्स. बैंक निफ्टी इज बुलिश, एंड इफ यू रिमेंबर दी this daily chart which I had discussed, Bank Nifty almost has entered in that range. Now Bank Nifty is a very special case here. Why? क्योंकि इसमें अभी भी अपसाइड एक सिग्निफिकेंट है, बट आई थिंक अपसाइड के बाद एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड भी बैंक निफ्टी में आएगा. इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा चार्ट हम ओपन करते हैं, एंड very quickly we will wind up with this analysis. So this is the simple chart of Bank Nifty. So where are we in Bank Nifty? See, this is the zone that I'm talking about. There's an unfilled gap over here, which most likely Bank Nifty should aspire to fill. Actionable trade perspective से हमारा जो 36,250 36,300 का लेवल है, that is a great support. Okay, and this is the last target 37,400. So इस रेंज में बैंक निफ्टी को हम ट्रेड करेंगे. सो ऑन द लोअर साइड वी हैव दिस, और द वीकली मॉब लेवल will be 36,000, say 36,200. Okay, and on the higher side 37,150 is one major target which I think is going to be done. Second target will be 37,500. Okay,
Now, I am not expecting Bank Nifty to cross about 37,500. I think yes, it can very well touch both these levels. जिसमें से 37,150 if comes first, that I think this is definitely going to happen. 37,150 if it comes first, there will be one round of profit booking. कहाँ तक होगा? 36,600 तक. And watch 36,600 from there. If you start to go higher, then the next round is 37,500 और 37,400, जहां पे मैं समझता हूं कि ये पूरा रैली जुलाई का it should terminate and then we should start the corrective part. So एक दो सिनेरियो है, सिनेरियो वन एंड देन सिनेरियो टू. ये सिनेरियो को ध्यान में हम रख सकते हैं. लेवल वाइज वीकली मॉब लेवल इस तरीके से 36,200 के नीचे ही बाजार में कुछ बेरिशनेस आएगा एंड पॉसिबली 33,500 कैन कम ऑन द लोअर साइड. बट या 36,100 200 these are rock solid levels. And if we do not complete the higher targets and break these levels first, that would mean some correction is going to come. So that's all on the bank nifty part from a weekly perspective. अगर हम कल के लिए बात करें तो I think again it's very easy. Let me open the intraday chart and then we will take the stock queries क्योंकि अब stocks में ज़्यादा interest है. See, this is the chart, intraday chart for tomorrow. So कल इंट्राडे के लिए आई वुड गो विद दिस 36,000 से 770 देयर अबाउट्स. सो और रफली यू कैन से प्रीवियस डे हाई. सो basically this is the supply zone, this is the mob level. Okay, if there is a gap up opening, don't fade it. Why? Because 37,000, let me just write 36,700 is the mob level for tomorrow. Not 700, it's 800 you can say. ठीक है, 36,800 and upside 37,150. As I said, this level is a very awesome level. So if there is a gap up opening, okay, try to buy on dips with the closing price as a stop loss below this 37,150 पे profit booking हम करेंगे. और यहाँ पे keep an eye, there should be some selling at 37,150 which can again take you back to 36,800 mob level. Not only that, but give a certain crack towards 36,600 500 etc. ठीक है. So downside में 36,500 will be first target followed by 36,400. upside में 37,150. इसके ऊपर कल मैं expect नहीं कर रहा हूँ. Now, if there is a gap down opening, it will try to fill up the gap. That's when probably it can offer you a shorting opportunity. In that case, 37,150 को stop loss आप रख सकते हो. ठीक है, या फिर अगर मॉब लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो जस्ट क्लोज योर शॉर्ट. ठीक है. सो that's the update on the bank nifty. So with this I wind up the weekly analysis. I think I have spoken myself for 1 hour. ठीक है, अगर कोई स्टॉक क्वेरी है तो हम थोड़े बहुत स्टॉक क्वेरीज लेंगे फटाफट एंड देन वील हैव टू वाइंड अप. वी हैव क्रॉस्ड द एंटायर 1 hour mark. Okay, so there are no stock queries. So in that case, let's wind up. Probably tomorrow we can discuss the stock queries. आज बहुत लंबा सेशन हो गया. अगर कुछ है तो आप फटाफट डू लेट मी नो एंड देन आई कैन टेक और एल्स हम वाइंड अप करते हैं. ICICI बैंक, ICICI बैंक हैज स्टेज्ड अ वेरी नाइस रैली एंड इसमें गैप को क्रॉस कर चुका है. सो माय एडवाइस वाज टू एग्जिट एट द गैप. सो इट्स एग्जिट. ओके, it's exit for now, although it can keep going higher, but my exit is done. It can go till 820 also. Zeal long करने के लिए Zeal is a perma bear counter दोस्त. So Zeal में अपटिक आ सकता है 252 तक. वहाँ पे जो है आपको एग्जिट कर देना चाहिए. It's not a stock for mainstream people. OFSS. See, OFSS again, these bearish stocks, okay, they are trying to break the resistances. So if you are long, then keep a stop loss of 3,000 and yeah, 30
35, there's a gap also at 3500, and I think this should come. Okay, this much I think it's okay to expect. Yeah, but definitely stop loss please keep in place, because as you can see the stock is in a complete downtrend. पूरी तरीके से बेरिश काउंटर है ये. ओके, नेक्स्ट इज एसबीआई. सी एसबीआई हमने बहुत पहले लॉन्ग में रेकमेंड किया था. आई थिंक जिस वीक में मार्केट ने बॉटम किया था उसी टाइम मैंने ग्रुप में उसका चार्ट डाला था, बिकॉज इट हैड मेड अ बुलिश एंगल्फिंग दैट टाइम. सो 520 मिनिमम अपसाइड है जो कि आ चुका है, 570 तक का टारगेट है. सो इसे आप ध्यान देते कि 520 पे मेजर रेजिस्टेंस है दोस्त. अगर 520 को गैप अप से क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 560 चला जाएगा, न्यू हाई बना देगा. ओके, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगा. हमने काफी महीनों से इसमें एक ही व्यू रखा है, 440 ऑन द लोअर साइड एंड 570 ऑन द हायर साइड विद 520-25 एज अ मिड पोर्शन. सो इट हैज डन द मिड पोर्शन थिंग. नाउ इट इज अप टू यू, आप चेज करना चाहें या ट्रेल करना चाहें. So you can trail to 500 and just try if it breaks higher. रिलायंस आई हैव ऑलरेडी सेट 2575, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए. सी रिलायंस में प्रॉब्लम क्या है, रिलायंस में द प्रॉब्लम इज आई रियली डोंट लाइक दिस थिंग्स, बिकॉज ये मुझे पता है कि भविष्य में ये ब्रेक होगा. ओके, सो जब मुझे पता है कि कोई चीज़ जब नीचे गिरने ही वाली है, देन वाई टू टेक माई चांस ऑन द हायर साइड. सो रिलायंस में अभी लास्ट वीक जब ये यहीं कहीं था 2400, तब मैंने दिया था कि आप 2500 के ऊपर जाता है तो निकल जाओ. सो इट गेव वन मूव, आफ्टर फ्यू डेज एक गैप अप हुआ था, एंड देन अगेन इट वेंट एट एंड सेटल्ड एट 2500. So if you get any move, like my plan is very simple, that if there is a doubt I want to stay out, so that is why I'm out here. Okay, so any move, if it comes, then it's a very lucky move. There's an unfilled gap also at 2700, निकल जाइए कोई भी move आए. See, the idea is that when this is broken, something will come out in the form of a news or etc. So the plan is either buy at a lower price or wait for this thing to get broken, and if it comes back again then go long, because in that case it would go all the way till 3500 over here. इस तरीके से a false breakdown. So that's the plan. So that is why out. ITD, what is this stock? ITD cementation. Okay. See, this stock, it really looks very nice. The structure, the volume is being pumped. So what you can do is you can book profits somewhere near 85 and 90. So still it can go 5 to 7% higher. So that's the place where you can book out. I'm assuming you are long. HDFC Limited. HDFC Limited has broken out with a gap. ओवरऑल ये वही रेंज में रहेगा, मुझे कुछ खास इसमें एच डी एफ सी, वेर इज एच डी एफ सी, सॉरी, एच डी एफ सी, या. सो एच डी एफ सी, सी आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच अपसाइड. 2400 कैन कम, एक और 100 रुपया, उससे ज़्यादा मुझे इसमें अभी लग नहीं रहा है. आई थिंक द एच डी एफ सी बैंक्स दे विल बी केप्ट इन अ बिग रेंज. जैसे वो 1200 से 1500 में, उसी तरीके से ये 2000 से मे बी 24,000, बस उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है. मे बी चीज़ें इंप्रूव होंगी फ्यूचर में. ICICI Bank I have already explained. Wipro, see Wipro, हाँ, विप्रो जो है अभी तक देखो बचा हुआ है 390 वाला, 2 रुपए से बचा है. सो जस्ट कीप 390 एज अ स्टॉप लॉस, होप फॉर द बेस्ट. 430 के ऊपर, 430 रुपए के ऊपर ही फिर ये बहुत तेजी में आएगा. सो दैट इज द व्यू. बेयर कॉर्प, बेयर कॉर्प, bear crop, sorry. Yeah, this is a strong chart actually. This is a strong chart. एंड इसमें मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि अगर आप ऊपर के लेवल्स में लॉन्ग हो, एंड इफ यू कैन कीप 4700 एज अ स्टॉप लॉस, देन डेफिनेटली यू शुड होल्ड इट, बिकॉज आई थिंक दिस स्टॉक डिजर्व्स अ बिग रैली इन कमिंग वीक्स एंड मंथ्स. So we can clearly see there's a potential case developing for a imminent breakout,
and I like these rounding structures just below the resistances are there. So ना एक बार थोड़ा इसके ऊपर 5600 वगैरह कोई क्रॉस कर दे, इट वुड बी अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर, बहुत ही शानदार, ये एक आपका सॉर्ट ऑफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही बढ़िया चार्ट है ये. यू जस्ट नीड लिटिल बिट ऑफ टाइमिंग. सो दैट्स द थिंग, इसीलिए मैंने कहा 4700 को स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि ये स्टॉक अगर 5600 के ऊपर चलना शुरू करता है, सबसे पहले 6000 जाएगा, एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि ये न्यू हाइज वगैरह भी मार दे. सो ओके, समवेयर नियर हियर. सो keep these things in mind. 4700 is the exit on downside. You have Abbott India for positional short. Okay, Abbott India. Let me see. देखो बॉस, ये स्टॉक थोड़ा सा ना रिस्की है, नंबर एक बात. दूसरी बात, अभी तो शॉर्टिंग के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, बिकॉज इसने रेजिस्टेंस के ऊपर अभी क्लोजिंग दी है. ओके, प्लस द वे इट इज मूविंग अप, शॉर्टिंग इसमें तभी कन्वर्ट होगा जब ये 19,500 के नीचे क्लोज होगा. अभी तो कोई शॉर्टिंग नहीं है. CDSL, देखो CDSL एंड ऑल दोज रिटेल वाला स्टॉक्स, इनमें लॉन्ग नहीं है, बट इनमें तेजी आएगी क्योंकि द मार्केट इज होल्डिंग अप. सो दैट इज अ थिंग. सो अगर आपने इनमें लॉन्ग किया है तो आप 1000 रुपीज 1050 को एज अ स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं. 1230 तक इसमें जाना चाहिए, क्योंकि ऑल द डेड काउंटर्स दे विल ऑल्सो फ्लाई हाई to backtest their lost support, lost moving average. So I think 1230, 1230 should come, and keep 1000 rupees or 1050, 1040 as a stop loss. Okay, so that's the view. I think 1240 should come. Uh, Tenla platforms bought at 960. 960 पे बाइंग प्राइस है. 960 तो मतलब यहीं कहीं की बाइंग प्राइस है. सी, ये स्टॉक वैसे आप देखिए, इट्स अ कंप्लीट डाउन ट्रेंड वाला काउंटर है, ठीक है. यहाँ पे भाव ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज चार्ट अभी भी बेरिश है. सो ये स्टॉक अगर आप 1020 के ऊपर खरीदते तो एक अच्छा स्ट्रेंथ होता, ठीक है. सो यहाँ पे द ओनली थिंग यू कैन डू इज कीप 880 एज अ स्टॉप लॉस फॉर द टाइम बिंग. अगर स्टॉप लॉस हिट होता है और स्टॉक 1040 को कट करता है तो वापस से बाय करेंगे, ठीक है. ये एक बेस्ट अप्रोच होगा. इन दैट केस स्टॉक 1250 भी जा सकता है. So you need to see this stock above 1020 bare minimum, and वो भी immediately. ज़्यादा समय लगेगा तो स्ट्रक्चर और ख़राब हो जाएगा. फिर इन दैट केस स्टॉक का लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे तो कोई सपोर्ट ही नहीं है स्टॉक में. 800 रुपये के नीचे कुछ नहीं है. दैट इज द थिंग. महाराष्ट्र स्कूटर्स, महाराष्ट्र स्कूटर्स, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह नहीं हो रहा है. I think you are asking about this Maharashtra Scooters Limited or Maharashtra Seamless. Which one? I think Maharashtra Scooters NSC पे क्यों नहीं दिखा रहा है. चलो मैं महाराष्ट्र सीमलेस भी ले लेता हूँ, किसी का वो भी क्वेरी था. लेट मी जस्ट टेक. सो महाराष्ट्र सीमलेस देखो बहुत ही बुलिश काउंटर है, बहुत सही तरीके से ऊपर जा रहा है. सो आप ट्रेलिंग इसमें कीजिए, और अगर कोई करेक्शन आएगा तो बाय करेंगे. 600 रुपया अब इसका स्टॉप लॉस है. चाहे ब्रेकआउट बाय करो, पुल बैक पे बाय करो, 600 रुपया आपका स्टॉप लॉस है. नेक्स्ट क्वेरी है वेदांता. सी वेदांता भी मैंने थर्सडे को या वेडनेसडे को लिया था. मैंने कहा था कि स्टॉक थोड़ा और भी ऊपर जाएगा, ठीक है. कहाँ तक? कम से कम 280 के आसपास. सो आई थिंक मंडे एक और गैप अप होगा, एंड देन इट शुड गो हायर. नाउ एनी डिप टिल 240 इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी इन वेदांता. स्टॉप लॉस ज़्यादा नहीं है, 220 रुपये का स्टॉप लॉस है, छोटा स्टॉप लॉस है. एंड कम से कम 290 285 तक वेदांता में एक स्कोप है. स्टॉक डाउन ट्रेंड वाला काउंटर है, but I think given the commodities analysis that I've done and all those things, I think 280 290 should come for once. Coal India, is the next query. दोस्तों बहुत बड़ा वीडियो, बहुत बड़ा लाइव सेशन हो चुका है, 1 घंटा 15 मिनट. So I'll have to wind up for some time. See, Coal India is already sitting at some previous highs, so watch out. If you are in profits, then book some, trail some, and if it crosses 200, then I think 215 should come. Okay. Now, one thing I can say that Coal India, if you can trail to 185 rupees, then there is a good chance that 215 should come. Okay, so this is the breakout over here,
and any dip that comes at 190, see fresh trade है 190 risky है but I think ठीक है 190 पे you can buy 180 as a stop loss target 215, that is one trade. Okay, so you can adjust accordingly. एच डी एफ सी बैंक आई थिंक सम मोर अपसाइड इज देयर बट कोई बहुत बड़ा मैं इसमें बुलिश मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. 1200 से 1500 की रेंज हमने बहुत महीने पहले डिस्कस की है, वही चीज़ हो रहा है. ऑन द डाउन साइड यू कैन सी 1250 was the 1275 is the bottom, and on upside you have a massive resistance at 1500. सो एच डी एफ सी में यही चीज़ होगा, ये एक बहुत बड़े रेंज में इट विल कीप बोरिंग पीपल. समटाइम्स इट विल बिकम बुलिश अगेन बेरिश. So that is why I had said that if you want to buy at 1300, keep 1200 as a stop loss, and book near 1500. That's it. You can't do day to day trading. So as of now तेजी है. I think 1425 का लेवल जो है ये आपको देखने मिलेगा बहुत ही जल्द. And I think that will be the moment when Bank Nifty also touches the 37,150 level. माइंड ट्री अगेन सेम क्वेरी है. लास्ट वीक 2-3 बार इसे डिस्कस किया था. सो आई हैड सेड कि ये जब तक 2750 को नहीं ब्रेक करता है बने रहिए, एंड 3400 के आसपास इसमें आएगा. ठीक है, सो जस्ट वॉच इट. नाउ नोटिस वन थिंग, एवरी डे ये प्रीवियस डे बॉटम को होल्ड कर रहा है, तो इसको फॉलो करते जाना प्रीवियस डे बॉटम वाला. नॉट ओनली टिल 3400, अगर 3400 के बाद भी चलता है तो कीप ट्रेलिंग. यू मे नेवर नो कि आपको 3600 का भी भाव आ गया. अंडरस्टैंड? सो दीज स्टॉक्स दे बिहेव इन अ टिपिकल फैशन. सो जो चीज हमें समझ में आ गई है बस उसको फॉलो करते जाओ. लास्ट क्वेरी आज के लिए लेंगे, स्किपर इज द लास्ट क्वेरी, एंड आज ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट वी हैव टू वाइंड अप, नहीं तो मैं और स्टॉक्स ले लेता. सो स्किपर इस समय देखो अगेन बिग डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, तो ज़्यादा मैं बुलिश नहीं होना चाहता. मार्केट तेजी में है, हो सकता है 65 रुपए को एक बार ये टेस्ट कर ले. ठीक है, एक आखिरी क्वेरी लेता हूँ हिंडाल को, क्योंकि मेटल है, मेटल स्टॉक है. सो हिंडाल को इस समय लेट मी सी द चार्ट. हिंडाल को इस समय दोस्तों बुलिश है, एंड आई थिंक हिंडाल को अगर आपको 360 रुपए में मिले तो यू शुड बाय विथ 340 एज अ स्टॉप लॉस. एक छोटा सा ट्रेड है. ओके, 340 एज अ स्टॉप लॉस, बाय 360 340 एज अ स्टॉप लॉस, एंड टारगेट हम लेके चलेंगे 430 425 30 के आसपास. ठीक है, सो दैट्स द अपडेट कमिंग ओवर देयर. सो आई लाइक हिंडाल्को. लॉन्ग टर्म पे आई थिंक इट हैज मेड द बॉटम एट 340. So it's a definitely a buying opportunity, definitely a buying opportunity for at least 50-60 bucks तो bare minimum. ठीक है, सो चलिए आज का वाइंड अप करते हैं. बहुत लंबा सेशन हो गया, 1 घंटा लगभग 20 मिनट हो गया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, एंड ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड यू कैन व्हाट्सएप एंड ज्वाइन फॉर द ऑगस्ट बैच ट्रेनिंग ऑन 13th and 14th August. Thank you so much. Wish you all the best. Take care. Jai Mata Di. Good night. Jai Mata Di.